Good morning, Yogesh. We can start. I think everybody has joined. So Yeah, we thank can you, start, sir. Yogesh. Sure, thanks, sir. Hello, everyone, and welcome to this press conference post monetary policy statement of the governor issued in the morning. We have today in the press conference with us today, besides the Honorable Governor Shri Shaktikanta, Deputy Governors Dr. Michael Dipatra, Shri M. Rajeshwar Rao, Shri T. Ravi Shankar, and also Executive Director Shri S.C. Murmu. So we have today colleagues from the media in large numbers. So straight away, I'll move on to the first participant. I will request Gordon to ask his question from Economic Times. Good afternoon, Governor. Gordon from the Economic Times. Sir, can you hear me? Hello. Please go ahead. Yeah, sir. It's kind of so pleasant surprise for the market, which was expecting in the least at least a reverse repo rate increase, and so you didn't even give that. So that in a way is a kind of a pleasant surprise. But just what is the rationale for not even doing that when you yourself mentioned in your speech that the weighted average rate for it has actually moved up to 3.87%. What is it you are trying to signal, and what is the objective of not even doing that? And at the same time, when all the central banks across the world are worried about inflation and raising rates, you seem to be comfortable with the fact that inflation could come down, and you have projected 4% for the second half of next year. What gives you the comfort that inflation will come down to 4% next year? Yeah, thank you. Once again, my season's greetings and Happy New Year to all of you and to the wider audience which is watching this program. Now, you see, you asked about the reverse repo. You see, the rates, whether it is the repo rate or the reverse repo rate, they represent a particular stance. They are reflective of the stance that the Reserve Bank has adopted with regard to monetary policy. At the current juncture, as I spelled out in my statement and as is spelled out in the resolution MPC, we have given the reasons why we are continuing with the accommodative stance. So when the stance continues, we did not see any reason to make any changes or tamper with the rates. But having said that, let me achieve that I also mentioned that the weighted average reverse repo rate is 3.87, and so in a very non-disruptive and in a very seamless manner, we have the reverse repo rate, effective reverse repo rate is 3.87%. And with regard to the inflation and what the other central banks are doing, let me say that on inflation, we have done our homework, and based on our homework, we have and very detailed analysis has been done internally. And based on our analysis, we have given the projection to of 4.5% as the overall inflation during 2023, and that is based on a lot of detailed analysis internally. In fact, I can tell you that all uncomfortable questions or all uncomfortable risks have been duly assessed, and we have arrived at these numbers. And with regard to what the other central banks are doing, well, the character of inflation is somewhat different in those economies compared to India. I would request Deputy Governor Michael Patra to sort of give out the details on that particular aspect. Thank you. Thank you. Dr. I think Michael. Yeah, thank you, Governor. I'm just responding to that. As Governor mentioned, the whole character of inflation is very different in the US, for instance, than from ours. For instance, one thing that is driving up US inflation is used cars. Now we are not. That is not a basis for our inflation, and now are we importing used cars from the US? Like in Europe, the issue is truck drivers, and that is also something we don't import. To give you a granular example,
food inflation, according to the Food and Agriculture Organization, is ruling at 29-30%. But our food inflation is between 2.5 to 3.5%. Even in the US, food inflation is 6.5%. So there is a material difference in the way in which our inflation is evolving. Also in the core inflation, the usual drivers of core inflation, such as wage growth or rental growth, is not there in India. So we have to respond to an entirely different inflation evolution. Thank you, Dr. Patra. Thank you, sir. I will now move on to Lata Venkatesh from CNBC. Thank you, Yogesh, and thank you, Governor. Well, sir, what is the oil price assumption of this inflation forecast? The last price hike was on November 4th when crude price was at $75. At least $10 worth, if not more, of price hike has not been passed on. So what are you assuming to come to this kind of an inflation forecast? And in that context, what is Reserve Bank's framework of a neutral real rate? And when will you even start the journey towards your neutral real rate? Now, when we will start our journey is something which I think we will be able to spell out only when we take a decision with regard to the oil, the petrol and diesel prices which you mentioned. You see, our inflation projections are benchmarked to international crude prices, and the crude oil prices, our projections are benchmarked to that. And we have examined various scenarios of where the crude oil prices will be. Various scenarios have been examined in the downside and in the upside. And based on that analysis, we have given out this projection. And you may ask, what is that number that you have adopted? For that, let me say that, this is that number we give out in the, the monetary policy report, 6 months MPR, which we would release in the month of April at the time of that MPC. But for this, at this moment, let me say that various crude oil prices, both in the downside and in the upside, have been taken into consideration, and we have made our analysis accordingly, looked at various scenarios, and we have arrived at whatever projections we have made. So my pointed question you didn't answer, sir. My pointed question was, have you assumed that no further hike will be made of what has not been passed on? And of course, what is your neutral real rate? I said that neutral real rate, I cannot spell out at this stage. I mean, you are, there have been in the past some, it has been given that neutral real rate, etc. It's a changed scenario completely. And at this point, I would not like to say it, at least from my side, unless the Deputy Governor would like to elaborate on it. But with regard to oil prices, as I said, we have taken various scenarios into consideration. Even the current crude oil prices, I'm talking about international crude oil prices. Our inflation calculation is based on international crude prices. And we have taken various scenarios into consideration. What is the likely crude oil price? How much can it go up or how much can it go down? And on both sides, we have considered that and made our projections. I think that's what I understood from your question. I have answered, unless the Deputy Governor wishes to add something. I think that's how I would like to reply. Thank you, sir. Yes, go ahead. I think DG Patra is okay with this answer. Yes, sir. I'll move on to Ira Duggal from Bloomberg Quint, please. Good afternoon, sirs. My question is on growth. So the projection for year-on-year growth of 7.8% for FY23 suggests that there is discomfort on the underlying momentum, because that year-on-year growth rate will probably mean sequential, seasonally adjusted growth somewhere in the 4 handle, I suspect. Is this discomfort on growth coming largely from what is being called as scarring, lower, sort of income growth, concerns of unemployment? Do you see all of that continuing to weigh on private consumption even in FY23, given that we know that the economic impact of different waves is now starting to moderate, with each new wave? My second linked question to that is,
Sir, the recovery is uneven. Nobody denies that. But at this stage of the recovery, isn't most of the heavy lifting to be done by fiscal policy, which it is doing? What is the role that monetary policy can play in this sort of an uneven recovery, sir? See, with regard to the first part of the question, I think the actual picture is otherwise. The inherent momentum of growth is positive. It's on the upward slope. The momentum is there, and the inherent momentum of growth is actually picking up. It's primarily due to base effects that the inflation, the growth projections which we have made, it is primarily because of the base effects, whereas the momentum is picking up. And the second part of your question, which you mentioned, is about, can you repeat, please? So just the role of fiscal policy versus monetary policy at this stage, the uneven recovery, perhaps fiscal policy is better attuned to deal with rather than monetary policy, which can have other effects. The large liquidity, the low rates can have negative effects as well. Yeah. No, I take that. You see, fiscal policy and monetary policy, you cannot see it as either or. And it has to be a coordinated approach, especially during this kind of difficult times that we have gone through, the kind of turbulent times that we have gone through in the last 2 years. The growth momentum is definitely positive, but in my statement, I have clearly spelled out that, private investment, the private demand, consumption demand, they all, they are still lagging. And it's not a question of either or. I mean, the fiscal action is calibrated. They have expanded capital expenditure. At the same time, as far as I see, there is an effort towards fiscal consolidation so as to reach the target which Finance Minister gave out in her speech last year as the target for 25-26. So they are on a particular, roadmap. So far as RBI is concerned, we are also on a particular roadmap, and there is a coordinated policy action. Definitely, the fiscal has an important role at the current juncture, and we feel that RBI also, the monetary policy has to be supportive to make the growth sustainable and durable. I think we have spelled it out, and that's how I would like to reply. If there is any other point which any of the deputy governors, because there's a larger question which any of the deputy governors, particularly Dr. Michael Patra, you wish to add or supplement, please go ahead. No, I think he is okay. So that's how I would like to reply. Yeah. Thank you, It's a sir. coordinated action that between the fiscal and monetary. So it's not that, sort of we pass on the pattern and then we just stand still. I mean, it has to be a coordinated action. Thank you, sir. I'll move on to Maitri Basurmat representing ET Now. Thank you, Yogesh. Thank you, Governor, and good afternoon also. Let me move away from interest rates to ask you another question, quite divorced from interest rates. Does the RBI have any reservations about India's inclusion in the global bond index? Any anxieties about the long-term impact and the potential for it to increase our long-term vulnerability to external hot money flows? You see, there is a budget announcement which was made, I think, last year or year before last in that direction. And our approach has been very calibrated. Last year, we, introduced this FAR, the fully accessible route, whereby certain bonds where, there is no limit with regard to how much of FPI or, investment from outside will come in. Bond inclusion, you are right. It works both ways, and it works both ways. You have a greater flow of resources into the country, but when the index, becomes adverse, then there could be sudden outflows. And the strongest point of our debt profile is that it is it's largely more than 90% denominated in the Indian rupees in domestic currency, and exposure to forex, exposure to foreign exchange in our domestic borrowing, that is the government borrowing I'm talking about,
is not, it's much, it's just about 5-6%. So that is, so inclusion in domestic bond market is, has, it operates, it can operate both ways, right, to that extent. So that is precisely the reason why RBI and the government are taking a very calibrated approach on this issue. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Manojit Saha from the Business Standard. Good afternoon, Governor. First of all, one clarification. You just said that the rates were not changed, repo and reverse repo, because the stance remains unchanged. If I hear you correctly, does it mean that you will increase even if the reverse repo rate once you change the stance to neutral? And also, if you can throw some light that whether you are open to expanding your balance sheet via OMO purchases, given the large borrowing program. Thank you. Well, I mean, these are all future actions. Time will tell. But good to see you, Manojit, after a long gap. And let Deputy Governor Patra take this question. Yeah, Manojit, at the current time, the rates, as the governor mentioned, reflect our stance. What we do going forward is not probably apposite of me to state, but we will follow what governor said, a calibrated and a well-telegraphed approach. So you will know beforehand what our strategy is going to be. Thank you. Thank you. And let me just add that in my statement, I have clearly said that all our actions will be calibrated and well telegraphed. So as and when we decide on something, we will spell it out, and we will give a guidance, and it will be calibrated. We don't like suddenness and sudden surprises. Thank you, sirs. I will move on to Mr. Bijoy Idicheria from Informist Media. Thank you, Yogesh. Sir, just because you mentioned the calibrated and well telegraphed, that's there in your statement, but it's not there in the MPC statements. Should we read that as RBI commitment, or should we read that as an MPC commitment? Because there seems to be a disconnect between how you're trying to get the orderly evolution of the yield curve benefits for the market and what the market seems to think you all are going to do. So there seems to be a gap. So is this guidance that you all are giving an RBI guidance, or is it an MPC guidance? You see, issues relating to liquidity and yield curve management, guidance to the, so far as the yield curve is concerned, guidance for liquidity is concerned, that is in RBI's domain. So liquidity is not really in the domain of the MPC. So therefore, MPC, in the statement of the MPC doesn't go into those issues. Individual members, of course, give their opinion in their individual minutes, which we definitely take into consideration. But yield curve, abundance of liquidity, or whatever issues relating to liquidity and yield curve, that's entirely RBI's domain. So therefore, it's quite natural that it is in my statement. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Mayur Shetty from Times of India. Thank you, Yogesh. Governor, my question is on yields. Last week, we saw yields on government securities really rise, and it had gone even higher than some of the home loan rates. So is there a mispricing somewhere? And another question on liquidity, you all said that you all will have a dynamic repo, variable reverse repo. So do you see a lot of volatility in the money markets going forward? You see, the way we handle the government borrowing or the auctions, GSEC auctions, the way we handle it every Friday, that reflects the Reserve Bank's approach, how the Reserve Bank looks at things. Now, yield curves did go up. You are right. Perhaps, I don't know. The market players will be in a better position to say. Perhaps the market was, judging that the inflation would be much higher. That was perhaps the market judgment about it.
put your mics on mute. I think somebody's mic. Yeah, thank you. So perhaps the market was judging that the inflation trajectory could be much steeper and it could be higher. But we have given our inflation projections today, and I'm sure the market will take that into consideration. I would not like to state specifically what is the comfortable level, but our bond, the way we deal with the auctions with regard to the, the government GSEC auctions, the way we deal with it, and the cancellations or the developments that we do, that I think reflects the thinking of the Reserve Bank. So on the second part on liquidity, do you expect some volatility on the liquidity going forward, given that you're choosing a dynamic approach to reverse repos? Let Dr. Patra take that question. I think other colleagues also should come in. Let Dr. Patra take this question. No, we expect a smooth rebalancing. It's been going on that way. Till now, money market rates have been evolving in a very orderly fashion. Given the presence of the liquidity overhang, we also see that dampening volatility a lot. And our actions have actually been very seamlessly put into the market, and they have not caused any volatility. So we do not see undue volatility from the money market, at least. Thank you, sirs. I'll move on to Ms. Ruchi Bhatia from the Bloomberg. Thank you, Yogesh. Governor Das, good afternoon. I have two questions, one a more broader one and one a more pointed one. On the broader level, the markets were expecting some kind of cues on accommodation when the global central banks seem to be tightening. Do you see the risk of the Indian central bank, the RBI, falling behind the curve? And on the second, in terms of the second question, is the RBI comfortable if VRR cutoffs are higher than the repo rate? Well, on the second part, I cannot spell out. I cannot say the moment I say something, the market takes it as a, so it will not be possible or correct. It's for me to say at what level the VRRR levels we will be comfortable with. Now, falling behind the curve, we are very clear. I think we have stated it very clearly. And in our assessment, we are very much in sync with the evolving situation. I have said it in my statement. In fact, that particular part of my statement, I read out twice. And if you recall, a certain part I read out twice. Basically to say that it is geared by our policy is driven by the evolving domestic inflation and growth scenario. Price stability is definitely uppermost in our mind. At the same time, we are fully mindful about the need to support growth and make it more sustainable. So in our assessment, we are not behind the curve. Global central banks are following a different path. That is because of their various domestic factors which are impacting them. And our domestic factors are different, as was explained little while ago by Dr. Michael Patra. So therefore, our assessment is that, what you are saying, we are certainly not behind the curve, but you are free to have your opinion. And good to see you, Ruchi, after a long gap, after the Delhi days. Okay. Thank you, sir. I'll move on to Mr. K. Ramkumar from the Hindu Business Line. Good afternoon, sir. Governor, sir, you have made an interesting statement. You are saying that you're expecting the market participants to engage responsibly and contribute to cooperative outcomes for the benefit of all. The statement you made with regard to the government borrowing program, actually. I just want to know, somewhere at the back of your mind, whether you see any kind of reluctance among the market participants to actually subscribe to these auctions, actually. I think you should ask this question to the market participants. And we have constant interaction with the market. Our, the relevant departments in RBI are constantly in touch with the markets. But whether they have an inherent reluctance or something which I think the market participants should be better placed to answer. Whenever they have any questions or other things, we do clarify
we do clarify their points. And if they have any concerns, we try to address those concerns also in the, taking into account various aspects. It's not that whatever market expects we will give, because we have a commitment to financial stability. So, but we are in regular touch with them, and at least I have not noticed, or my colleagues, we have not seen any sign of what you call discomfort, quote unquote. But I think the market participants will be in a better position. Thank you. थैंक यू सर. मैं आमंत्रित करूंगा श्री नीरज वाजपेयी, CNBC आवाज. थैंक यू योगेश जी. गवर्नर साहब, मेरा सवाल ये है, अभी हम लोगों ने चर्चा की इन्फ्लेशन की. अगर आप एनर्जी बास्केट को पूरा देखें तो क्रूड ऑयल 93, 92 पे चल रहा है. अगर आप इंडियन बास्केट को देखें तो वो भी 88, 89 से कम नहीं है. और गैस प्राइसेस देखिए आप, तो वो भी बहुत ऊपर है. अप्रैल में अगला रिव्यू है जो हायर साइड में होगा. 90 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है. आई डोंट नो द रीजंस. तो पूरा एनर्जी बास्केट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और जो टोटल कमोडिटी प्राइसेस, चाहे मेटल, फेरस, नॉन फेरस जो भी लीजिए, वहां से भी है. तो क्या हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? एक. दूसरा, जो ग्रोथ हमारी है वो बहुत इक्विटेबल नहीं दिख रही. कुछ पॉकेट्स में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन SMEs में, छोटे सेक्टर्स में नहीं है. और दूसरा एक छोटा सवाल ये है कि जो डिजिटल रुपये की बात की गई है बजट में, उस पर क्या प्लान्स? इसे देखिए, जैसे कि मैं बिगिनिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिगिनिंग में जैसे मैंने कहा कि सारे सिनेरियोज आप जो कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जितने सिनेरियो पॉसिबल है डाउन साइड, अप साइड में, हमने कंसिडर किया है. और हमारे हिसाब से ये जो प्रोजेक्शंस है, ये मतलब रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस है, क्योंकि एज ए सेंट्रल बैंक हमारा भी क्रेडिबिलिटी का इश्यू है. हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई गलत प्रोजेक्शन मतलब डिलिबरेटली दे कि कुछ उससे कुछ नतीजा निकले. वी हैव डन आवर होमवर्क. डिटेल्ड एनालिसिस इंटरनली किया गया है. सारे सिनेरियोज को कंसिडर किया है. सारे क्रॉस करेंट्स, अनकंफर्टेबल डेवलपमेंट्स, उसको सब फैक्टर किया है. और उसके बाद हमने जो उसका प्रोजेक्शन हमने किया है. जहां तक MSME यूनिट्स और छोटे व्यापारियों का सवाल है, उसमें आपको अगर याद होगा, ये जो पैंडेमिक पीरियड में हमने 3 बार, एक बार जनवरी बिफोर द पैंडेमिक, जनवरी 2009 एक MSME सेक्टर के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया था. और पैंडेमिक पीरियड में 2 स्कीम्स अनाउंस की. एक शायद लास्ट 2020 अगस्त में अनाउंस किया था MSME सेक्टर के लिए. और फिर पिछले साल जब सेकेंड वेव आई थी, उस वक्त भी हमने MSME सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ्स और कुछ रेजोल्यूशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स हमने अनाउंस किया था. उसके साथ साथ हम MSME के लिए आज के जो अनाउंसमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जो लिमिट है उनका रिफाइनेंसिंग के लिए, वो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक हमने उसको NAC फ्रेमवर्क में उसको बढ़ा दिया है. और बाकी हमसे जो हो सकता है एज ए रिजर्व बैंक, एज ए सेंट्रल बैंक, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या डिजिटल पेनिट्रेशन हो, उसमें बहुत सारे कदम लिए गए हैं. फाइनेंशियल पेनिट्रेशन में हम सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम 2024 तक कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने अनाउंस किया है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन साइड में भी काफी स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, और MSME साइड में भी जो हो सकता है हम ले रहे हैं. और आज भी हमने ये अनाउंस किया है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव और हेल्थ केयर सेक्टर है, उसका भी एक्सटेंशन, जो लिक्विडिटी विंडो, उसको एक्सटेंड किया है. लार्ज कॉर्पोरेट्स जो है उनके पास कैश सरप्लस पोजीशन काफी है, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स जो है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में, वो इससे ज्यादा फायदा उनको ही मिलता है. और वो हमारे साइड से लिया है. बाकी गवर्नमेंट साइड से तो उन्होंने कई सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं. और वो सेंट्रल बैंक करेंसी की तरह बात जब कर रहे हैं, तो मैं आपने हमारे सहयोगी कोलीग डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी को रिप्लाई देने के लिए अनुरोध करूंगा. धन्यवाद गवर्नर जी. जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, CBDC या डिजिटल रुपये पे हम पिछले करीब 1.5-2 साल से काम शुरू कर चुके हैं और काम चालू है. इस बजट में प्रपोज किया गया है कि RBI एक्ट अमेंड किया जाएगा टू एनेबल इशू ऑफ CBDCs.
एक बार वो हो जाता है तो हम जो पायलट्स हैं या प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब ट्राई कर सकते हैं। आगे जाके इस साल में हम उसका जो CBDC का जो बहुत सारे डिज़ाइन फीचर्स हैं या टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस हैं, ये सब आगे जाके ये प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट द्वारा टेस्ट करेंगे और जैसे बजट में अनाउंस किया गया है वैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल। सर कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है क्या? नहीं, टाइमलाइन में ये क्वेश्चन को आई विल टेक दिस क्वेश्चन। टाइमलाइन नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी ने कहा, बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है, उसको मद्देनजर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं। बहुत केयरफुली कॉशियसली एग्जामिन करके इसको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सारे रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटरफीटिंग, तो उसको बिल्कुल मतलब प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसीलिए ये एक नया मतलब प्रोडक्ट है। सारे सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर, जो भी सेंट्रल बैंक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत कॉशियस प्रोसीड कर रहे हैं। हम भी विथ ड्यू केयर एंड कॉशन इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। और जो टाइमलाइन में अभी स्पेल आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2022-23 में जैसे कि बजट में कहा गया है, हम उसको मतलब उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद गवर्नर एंड गवर्नर महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वाति खंडेलवाल फ्रॉम सी बिजनेस। धन्यवाद योगेश एंड धन्यवाद गवर्नर। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरह से आज की पॉलिसी में आपका स्टांस रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अब शायद हम बहुत एग्रेसिव रेट हाइक्स नहीं देखें कैलेंडर ईयर 22 में। सर एग्जैक्टली डेटा पॉइंट्स क्या होंगे आरबीआई के लिए व्हेन यू विल स्टार्ट टू इंक्रीज रेट्स? क्या आप देख रहे हैं? जैसा बहुत सारे मेरे कॉलीग्स और आपसे पूछा कि वर्ल्ड ओवर पॉलिसी मेकर्स का थॉट इस पे कुछ अलग है, तो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन देखते हुए क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो आरबीआई को इंक्रीज करने की तरफ बढ़ाएंगे रेट्स को? क्योंकि ये एक सर समझना आपसे जरूरी है। और साथ में फिनटेक प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे सर कि आरबीआई गाइडलाइंस के साथ आएगी एनबीएफसी की, जो आपने पहले कहा था उस पर बातचीत चल रही है, उस पर क्या अपडेट है सर? क्या टाइमलाइंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर? कब कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? तो फर्स्ट सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था, जस्ट प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर फिनटेक कंपनीज फिनटेक तो हाँ ठीक है। एनबीएफसी लाइसेंस जहां पर गाइडलाइंस कुछ ड्राफ्ट आपने अदर पार्ट सॉरी आई सॉरी पहला सवाल सर मेरा ये था कि वर्ल्ड ओवर जो थॉट प्रोसेस है उससे हम थोड़े अलग सोच रहे हैं। अच्छा ओके, या आई रिमेम्बर, या इसी देखिए वर्ल्ड ओवर जो थॉट प्रोसेस है वो सब डोमेस्टिक सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं। हम भी अपने डोमेस्टिक ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक जो डायनामिक्स है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और वर्ल्ड पॉलिसी में भी देयर इज ए डाइवर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। आप देखिएगा जो टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज है अभी वर्ल्ड ओवर, एक सेंट्रल बैंक टाइटनिंग मोड में है, दूसरा जो लार्जेस्ट इकोनॉमी जो टॉप 2 में आते हैं वो लूजनिंग मोड में है। तो कई सारे सेंट्रल बैंक देयर इज अ डाइवर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। सो ये कहना गलत होगा कि वी आर द ओनली एक्सेप्शन। सो एंड हर एक सेंट्रल बैंक अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को मद्देनजर वो डिसीजन लेते हैं। बाकी डेटा पॉइंट्स आप जो कह रहे हैं, हम तो जैसे कि यूएस फेड में कर रहे हैं, डॉट प्लॉट्स हम नहीं देते हैं। हमारा अप्रोच ये रहा है जब भी कुछ डिसीजन लेंगे उसके लिए सफिशिएंटली कैलिब्रेटेड और फॉरवर्ड गाइडेंस दे के फॉरवर्ड सिग्नलिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। डॉट प्लॉट्स तो हम यूएस फेड के जैसे आरबीआई में हम नहीं करते हैं और उसके लिए कई कारण हैं। इसीलिए मैं अभी एट दिस पॉइंट आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू द डिटेल्स। थैंक यू। ऑन द एनबीएफसी साइड सर, एनबीएफसी में क्या सर गाइडलाइंस हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव। यस सर, आई टेक दैट। जो वर्किंग ग्रुप है ना डिजिटल लेंडिंग पे, उसका रिकमेंडेशन दिया था हमने, पब्लिक कमेंट्स के लिए भेजा था। पब्लिक कमेंट्स अभी आ चुके हैं, उसके आधार पर हम गाइडलाइंस फ्रेम करने वाले हैं। वो काम जारी है सर। टाइमलाइंस कब तक आ जाएगा? शॉर्टली मैं बोलता हूँ, जल्दी आ जाएगा।
धन्यवाद गवर्नर उप गवर्नर महोदय. I think there are 3-4 more who are raising hands, so let's conclude as Yes, yes, sir. Ankur Mishra from ET now, Sudesh. Thank you, Yogesh sir, for giving me the chance to ask the question. गवर्नर सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो CBDC है, वहां पर क्या कोई एक्सटर्नल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा या और कंपनीज को भी इन्वॉल्व करने की योजना है, या फिर RBI तक ही अभी ये सीमित है? दूसरा इस पर ये सवाल है कि आपने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से, पिछली कमेंट्री के हिसाब से होलसेल बेस्ड CBDC पहले शायद आने वाली है और उसके बाद रिटेल बेस्ड CBDC आएगी. तो इस पर अगर आप क्लैरिटी दे दें कि अभी के हिसाब से क्या योजना है RBI की. मैं डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी को अनुरोध करूंगा कि वो रिप्लाई. जैसे कि अब मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ, काम इस पे जारी है, काम सब मॉडल्स पे जारी है, होलसेल रिटेल सब पे जारी है. जो मॉडल अकाउंट बेस्ड है वो थोड़ा डेवलप करने में ईज रहता है, जो मॉडल टोकन बेस्ड है उस पर टाइम लगता है. तो उस हिसाब से कौन सा मॉडल पहले हम टेस्ट करेंगे वो सब आगे जाके डिसाइड करेंगे. जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि RBI खुद कर रहा है कि दूसरा एजेंसीज के साथ कर रहा है, हम अपना इकोसिस्टम में जो एजेंसीज हैं उन्हीं के साथ ही काम करते हैं. एक्सटर्नल बाहर की कोई एजेंसी वैसे किसी को यूज फिलहाल नहीं कर रहे हैं. आगे जाके जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हम लेंगे. थैंक यू. Thank you, sir. I'll request Swati Shetty from Reuters to ask her question. Thank you so much, Yogesh sir. So most of my questions have already been asked. So I just want to ask you this. So you said that you're going to look, ensure a smooth borrowing program even in the next financial year. It has been managed so far. But Governor, a large part of that was also because RBI was. Please put your mics on mute. I missed out part of your question. Yeah, Swati, go ahead. Yeah. So you've said that you'll continue to, ensure that the market borrowing is smooth, and you've obviously asked market participants to also, behave responsibly. You haven't actually spelled out any plan or any kind of, details on how exactly you're planning to do it. What kind of options are on the table? What are you looking at in terms of OMOs, OTs? What exactly are you considering? And obviously, the market is very spooked with a record borrowing number. Do you think the markets are overreacting? Was this big jump in yields completely unexpected? And again, I am not sure you want to give a yield level, but is there an appropriate level for the 10-year, based on the current fundamentals that the RBI thinks there is? Yield level तो हम spell out नहीं करेंगे, but हमारा actions will demonstrate कि किस लेवल पे हम कंफर्टेबल है. और जहां तक बोरोइंग का सवाल है, देखिए नया जो वित्त आय मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर वो अभी शुरू नहीं हुआ है. अभी तो उसके लिए 1.5 महीना 20 दिन बाकी है. When we enter the new year, we will deal with that issue. And having said that, let me reiterate and add just 3-4 more points. First thing, हमने ये कहा कि इसको स्मूथली हम एग्जीक्यूट करेंगे, नॉन डिसरप्टिव मैनर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है हम एट द अप्रोप्रिएट टाइम कंसिडर करेंगे. इसमें और भी 2-3 बात मैं ऐड करना चाहता हूं जो कि बजट में है और इसको मतलब माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है. पहला ये है कि देखिए NHAI जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है वो हर एक साल डायरेक्टली बोरो करते हैं. अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इस साल NHAI का IEBR दैट इज इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस जो है वो जीरो है, आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट नील. और NHAI के लिए इस बार सरकार जो है भारत सरकार शायद 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ गवर्नमेंट बोरो कर रही है. तो वो 65,000 करोड़ जो अदरवाइज NHAI वाज बोरोइंग वो अभी गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो करके NHAI को पास ऑन करेगा एज बजटरी सपोर्ट. सो देयरफॉर ओवरऑल जो बोरोइंग है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एंटिटीज उसमें
ये जो 65,000 करोड़ वो एडिशनलिटी नहीं है, वो पहले NHAI डायरेक्ट कर रही थी, अभी गवर्नमेंट बोरोइंग में आ गया है। दूसरा देखिए, हमने आज भी अनाउंस किया है वॉलंटरी रिटेंशन रूट में जो लिमिट था 1.5 लाख करोड़ का, वो वॉलंटरी रिटेंशन रूट 1.5 लाख करोड़ को हमने 2.5 लाख करोड़ कर दिया, 1 लाख करोड़ से बढ़ा दिया है। इसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे लार्जर पोर्शन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाते हैं और सम पोर्शन कम्स टू जी से, बट गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो डोमेस्टिक बोरोइंग रिक्वायरमेंट है सरकार का और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट मार्केट का, उसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो बाहर से आएगा। So to that extent, the pressure will be less. It is possible that some of them who are मतलब already जो invested है देश के अंदर, मतलब 90 days के लिए या 1 साल के लिए है, वो उसमें convert कर देंगे। बट अगर वो वहां से 1 साल के लाइबिलिटीज 1 साल का इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल के लिए कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो वो 1 लाख वो एक्स्ट्रा मनी तो वो फिर लाएंगे ना। सो इट डेफिनेटली a net additionality to the availability of resources to support the GSEC market as well as the corporate market domestically. And बजट पोस्ट बजट डिस्कशन में मैंने ये भी सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि स्मॉल सेविंग्स बढ़ सकता है, ज्यादा हो सकता है। इस साल का जो स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन है उसके हिसाब से अगले साल का स्मॉल सेविंग्स एस्टिमेट कंजर्वेटिवली 1 लाख करोड़ या 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ उन्होंने लोअर अमाउंट अस्यूम किया है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई थिंक सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि स्मॉल सेविंग्स भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये सब फैक्टर्स को भी हम माइंड में रखना चाहिए। अगले साल आने दीजिए फाइनेंशियल ईयर, फिर हम जो स्टेप्स लेना है हम कंसिडर करेंगे और उस वक्त बताएंगे आप। Thank you, sir. I think we can take last 3 questions if with your permission. Yeah, quickly, please. Please Yeah. keep your. Yes, sir. I'll request Anand Adhikari from Business Today to ask his questions quickly. Good afternoon, sir. So Union Budget has proposed CBDC using blockchain and the other technologies. So is there a clarity now that CBDC will not have a centralized ledger? And second, are global bankers working on a centralized ledger or a decentralized ledger? I think Deputy Governor Ravi Shankar can answer this question. Yeah, thank you. No, like I clarified even earlier, the technology choices are open. We are open to trying out all possible technologies. It depends on the use case, which technology would be more appropriate. So it's not one or the other. It will probably be whatever suits the case best. So as far as international is concerned, I mean, I'll not be able to say much about what they are doing, but a recent BIS survey had showed that about 80% of central banks are still in the stage of examining these things. So a large majority are still looking and assessing and examining at this stage. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Move on to Shritama Bose from Financial Express. Good afternoon, sir. My question is about the umbrella entity framework for retail payments. Has the RBI abandoned that project? And if not, when can we expect to hear from you about the names of the applicants who are getting the licenses? Yes, I agree. There has been some delay on that. That is primarily because the same officials who are dealing with that issue, they are preoccupied with, they got preoccupied with several other works. We are evaluating it's under evaluation. We will give out the details at a later stage. Thank you, sir. Now, Mridang Thaniwala from Newsrise, quickly. Thank you, Yogesh sir. Hello, Governor. Governor, is the MPC's attempt to bring the economy back to the pre-pandemic trajectory? Is that what we are seeking to do when we are keeping policy easy for longer, despite what the market has been expecting? Also, what is your assessment of India's potential growth going ahead, given that the world has changed a lot over the last couple of years? Thank you. I would like DG Michael Patrak to deal with this question. So if you recall, the monetary policy in India was already in accommodative mode before the pandemic.
And at that time, we were addressing the slowdown that had set in from the middle of 17, 18 or thereabouts. So that itself was followed by a pandemic response, which was pull out all stops to put a floor under the economy. So at the current time, we are engaged in still handling mitigating the impact of the pandemic, but our underlying concern and objective is to put growth on a strong and self-sustaining path. थैंक यू सर। सर मैं अंतिम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम सवाल श्री शैलेश यादव एएनआई को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ प्लीज गो अहेड। सर बजट में जैसे कुछ अभी जवाब आपने डिजिटल रूपी को लेकर दिया है कि किस तरह से आरबीआई तैयारी कर रहा है और इस साल जो है 2022-23 में आ जाएगा, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते आप। लेकिन सर डिजिटल करेंसी जानना चाहते हैं सर, ये है क्या? क्या ये जो है क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करेगा, या जैसे हम जो अभी रूपी नोट का ट्रांजेक्शन करते हैं किसी लेन देन में, उस तरह से डिजिटल करेंसी? और डिजिटल करेंसी आने के बाद सर क्रिप्टो करेंसी का क्या रूप होगा? क्या दोनों साथ साथ चलेंगे या क्रिप्टो करेंसी अलग होगी और डिजिटल रूपी अलग होगी? इसी जहां तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, हमारा जो पोजीशन, शैलेश जी आप दिल्ली से शायद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो क्रिप्टो करेंसी जो है आरबीआई का स्टैंड मैंने पहले स्पेल आउट किया हुआ है। हमारा जो पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है। क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और वॉट एवर नेम यू कॉल इट, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। आरबीआई का पॉलिसी एक्शंस इन वेरियस एरियाज, वो क्रिप्टो, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज which have currency like character, they will undermine RBI's ability to deal with issues of financial stability. और जो इन्वेस्टर्स, आज कहना मेरा ड्यूटी बनता है, पहले शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर्स अपना फैसला खुद करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं संक्षिप्त में, जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके खुद के रिस्क पे कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उनको ये भी माइंड में रखना चाहिए ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई अंडरलाइंग नहीं है, नॉट इवन अ ट्यूलिप। एंड बाकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन सीबीडीसी, मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आंसर करें। जी मैं कोशिश करूंगा। बेसिकली डिजिटल रुपी जैसे हम नॉर्मल पेपर रुपी है वैसे ही है, एग्जैक्टली वही है, 1-to-1 कन्वर्टिबल है, सिर्फ उसका फॉर्म डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। जैसे आप अभी रुपए अपना पॉकेट में या पर्स में लेके यूज करते हैं, वो डिजिटल रुपी आप अपना डिवाइस, सेल फोन या किसी से लेके टेक्नोलॉजिकली यूज करेंगे, वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप पूछ रहे थे क्रिप्टो करेंसी और इसमें फर्क क्या है। डिजिटल रुपी जो है वो रिजर्व बैंक ने इशू करनी है, वो जैसे रिजर्व बैंक का लाइबिलिटी रह चुका है रुपी नोट्स और बैंक नोट्स, ये एग्जैक्टली उसी लाइबिलिटी के पार्ट होगा। क्रिप्टो करेंसीज जैसे गवर्नर जी ने बताया वो प्राइवेट प्राइवेटली क्रिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Before I close, Khushu Narayan is there for a long time. I'll request her to ask a question quickly. Governor, has RBI asked the government to cut excise duty on petrol and diesel further? Because as prices are likely to rise sharply post-elections and it will lead to higher inflation, so has RBI discussed the crude oil issue with the government? इसी देखिए, आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच ये सारे इश्यूज में, इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज, हम रेगुलरली डिस्कशन करते रहते हैं। किस स्पेसिफिक आइटम में हमने रिक्वेस्ट किया, किस स्पेसिफिक आइटम में हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, ये स्पेल आउट करना मैं कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन इन्फ्लेशन इश्यू पे
जहां जहां हमारा कुछ कंसर्न है या कोई सजेशन है, हम गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। और गवर्नमेंट में भी एक्टिव मैकेनिज्म है इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए, तो रेगुलरली इंटरेक्शन होता रहता है इन्फ्लेशन रिलेटेड मैटर्स में। Thank you, sir. With this, we come to the conclusion of the press conference. I thank all the participants, especially the top management of Reserve Bank, Honorable Governor Shri Shaktikanta, Deputy Governor Dr. Michael Patra, Deputy Governor Shri Rajeshwar Rao, Deputy Governor Shri T. Ravi Shankar, Executive Director Shri S.C. Murmu, and all the media friends. Thank you all for participating and making it interactive. Thank you very much, and stay safe and stay healthy till the next time. Thank you.